आई थिंक आज के चैट को सुनकर आई एम होपिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल रियलाइज कि इंडियन लड़की होके भी कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ जा सकता है, मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जा सकता है, बॉडी पॉजिटिविटी को देखी जा सकती है। थैंक यू सो मच सुकृति। This is Mind, Body, Money with Riya. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। माइंड बॉडी मनी के इस बहुत स्पेशल एपिसोड में आई एम रियली एक्साइटेड टू ब्रिंग ऑन अ डियर एक्स कॉलीग एंड अ फ्रेंड सुकृति। हाई सुकृति बोल के इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपने देखा होगा। बहुत मोमेंट्स आपने एंजॉय किए होंगे, हंसते ठहाके मारते, गोते खाते हुए हंसी के मारे। शी डज सम अमेजिंगली फन डिजिटल कंटेंट जिसमें ह्यूमर भी है, लाइफ के इनसाइट्स भी हैं, थोड़ा जीवन दर्शन भी है इन हल्का फुल्का वे, और बहुत सारी मस्ती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करती है सुकृति। शी हैज ओवर 580,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब में तो कुछ 700,000 फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट। इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है और बहुत 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 प्यारी लड़की है। हाय सुकृति। हाय। मैं तुम्हें हाय बोल रही हूँ, तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम नहीं ले रही अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, correct. That's what sometimes people say. Hi Sukriti, and I'm like, okay, fine. हाय सुकृति ना हो जाए बस। No, but thank you so much for this wonderful introduction. And I mean, just to tell people that, I mean, Riya is saying that we were colleagues, but Riya was always like, I mean, she was not a colleague. She was like our boss, our super boss. But उनसे बातें जब होती थी तो ऐसे ही लगता था कि किसी colleague से ही बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से ही बात कर रहे हैं, because she was always so approachable and so you could talk to her about anything and talk to her for like keep talking, like it wasn't like देखो बातूनी तो हम हैं रेडियो वाले, है ना? नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि बॉस है तो मतलब you have to keep your talks limited or something like that. We could just sort of keep going on and on. So yeah. So I mean I had some of my best times in radio because of Riya. So yes. थैंक यू। हमने एक दूसरे की तारीफ जम के कर ली है। ये भी मैं बता दूं कि माइंड बॉडी मनी जो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सेहत पे फोकस कर रहे हैं, उसमें सुकृति क्या कर रही है। तो इस एपिसोड का नाम है इंडियन लड़की कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें लोग ईमेल्स भी लिखते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पे और डीएम भी करते हैं हमें इंस्टा वगैरह पे। अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस हवर अराउंड द, अब इंडिपेंडेंट होते, अलग रहते, वेस्टर्नाइज्ड पेरेंट्स होते तो अलग बात होती। टिपिकल इंडियन माहौल में ये सब करना मुनासिब नहीं, माँ-बाप अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं मिलता। ये तो वो घर है जिसमें 6 बजे के बाद पापा घड़ी देखने लग जाते हैं, 8 बजे के बाद मम्मी का फ़ोन आ जाता है, आप कह रहे हो बी इंडिपेंडेंट, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं सुकृति को कई सालों से जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल उसी मिडिल क्लास इंडियन बैकग्राउंड से है। ऐसा कोई साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली टाइप के कूल वेस्टर्नाइज्ड अमेरिका जाने वाले पेरेंट्स जो कहेंगे ऑफ कोर्स बेटा डू व्हाट यू फील लाइक टाइप का बैकग्राउंड तो था नहीं। सो सुकृति, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तुम्हारी वही कंस्ट्रेंट्स और वही रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं जो ज्यादातर इंडियन लड़कियों का होता है। बट यू हैव ब्रोकन थ्रू, यू हैव मेड योर ओन स्पेस, यू हैव डन व्हाट यू फेल्ट लाइक इट। और मुझे तुम्हारी जर्नी पता है रेडियो के दिनों से। तुमसे कोई वो नहीं करवा सकता था जो तुम करना नहीं चाहती। बिना कॉन्फ्रंट किए, बिना चीखे मारे, बिना अग्रेसिव हुए, तुमने हमेशा वही किया है जो तुम्हारा मन कहता है। Wow. It all sounds so nice. उस टाइम ऐसे लगता था कि अरे यार am I coming across as arrogant? Am I coming across as but हाँ
But nahi, of course, I mean, like you mentioned about, strict parenting and, वो सब, of course, all that is there. अभी तक मेरे को मिलता है, अभी तक मेरे को लगता है that I have strict parents, so it's not really changed. So the other day also I was at a podcast, और उस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया ही इसलिए था क्योंकि उस पॉडकास्ट का नाम था परमिशन के पंगे. So I was like, they were like, we thought you will be the perfect fit for this. I was like, yeah, true, thank you. मैंने कहा परमिशन के पंगे अभी भी होते हैं. अभी भी सोचो. हाँ, तो अभी भी होते हैं. तो I think this is something that will never go, I feel. But I don't know, somewhere you have to find that one path somewhere where you, मतलब आप of course अपने मन का तो कर ही रहे हो, and अब साथ में यू मेकिंग श्योर कि इतना माहौल खराब ना हो, नहीं मतलब दंगे ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए. मतलब चूजिंग योर बैटल्स वेल बेसिकली. हाँ, करेक्ट. इनफैक्ट माइंड बॉडी मनी में सबसे पहले माइंड आता है, तो मैं उसी पे फोकस करना चाहूंगी कि मेंटल स्ट्रेस क्या होते हैं, मेंटल गेम्स क्या होते हैं, और उसको एज एन इंडियन वुमन इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कैसे मैनेज करते हो? You know, this might sound very छोटी सी अजीब सी बात, but this is what I have felt over years. क्योंकि पहले मेरे को ऐसा होता था कि जैसे even a small thing like supposed to have to go for a night stay, तो I would ask my dad, and he would refuse. और मुझे डांट भी पड़ती थी कि तुमने पूछ भी लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. कैसे लिया, उसी पे डांट पड़ गई. मुझे इसलिए, और मैं जा भी नहीं पाती, एकदम मैं जा भी नहीं पाई, और मैंने डांट भी खाई, तो डांट भी खा लिया. हाँ, तो मैंने कहा ये क्या है. तो over the years now I become very selfish, I think, I don't know, but मुझे ऐसा लगता है कि जो करना है, डांट तो either ways पढ़नी है. तो बेस्ट कि जो आपको करना है वो तो कर ही लो आप, क्योंकि डांट तो वैसे खानी है. तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे यार किया भी नहीं और डांट भी खा ली. तो मतलब वो क्या कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना. But like, coming, this is like talking seriously, I think बहुत सारे mental struggles होते हैं, of course. मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि now we've started talking about mental struggles. हम उसके बारे में उसको address करना शुरू कर दिया हमने with therapy, and with that. I feel that while I was growing up, probably these things were not very normal. इसीलिए शायद हमको पता भी नहीं चला कि शायद we are going through a phase, या फिर we were not able to कि ये पैनिक है, ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन, पता ही नहीं था. हमें पता ही नहीं था. अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ, करेक्ट कि पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, पता नहीं why, I don't know, there used to be times when like I don't know why I'm crying, so now when I look back I feel कि अच्छा, probably we were also going through that phase. Sometimes I discuss with my sister also कि should we take therapy now, because of what we have gone through. Sometimes we discuss कि हाँ चलो लेते हैं, वो कभी हुआ नहीं, we never really got to a point. But if get a chance, I mean, I would want to take it. Right. I would want to, not because I'm going through something right now, but probably because of something that I have gone through. वो कहते हैं, sometimes you need to unpack the past also. Exactly. And understand your life in the context of your past experiences. Exactly. So that is what I'm trying to say, that if you ever feel that way, if you feel like lost, or if you feel like crying, and so get to the core of it कि क्यों हो रहा है, and what is the, instead of just brushing it under the carpet. तो मेरा तो इनफैक्ट बहुत बार ऐसी हैबिट बन गई थी, to just brush it under the carpet, कुछ नहीं है ऐसे, क्योंकि और कैसे डील करोगे ना. जब टूल्स ही नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो कैसे डील करोगे. करेक्ट. पर तू कैसे डील करती थी अपार्ट फ्रॉम इग्नोरिंग इट और ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट, और कोई कोपिंग मैकेनिज्म था तुम्हारा? I think you mentioned your sister. My sister, my mother, both of them were very like they're also very like very mom, I don't know, like especially moms wali generation do not understand the whole mental health concept. Correct. उनको लगता है क्या है ये. मेरी एक I must tell you, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी माँ को वो जब बोलती थी उसको कुछ हो रहा है, उसकी माँ बोलती थी पानी पी ले. Sounds like my mom also. Sounds like my mom also. मम्मी like नहीं थक गई होगी, सो जाओ, ये हो गई. तो उस टाइम because I was also not aware of these concepts, तो मुझे भी लगता था हाँ शायद थक गई, तो मैं भी सो जाती. So it was very easy for me. But now when I discuss things with her, तो she's also very नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है. And कुछ नहीं होता है. हाँ, कुछ नहीं होता है. And because my mom has also experienced a lot of like such thoughts in her life, and she has managed to come out of it very like
victorious. तो उनको लगता है that if I can do it, then you can also do it. Was her, idea or was her thought, which also was somehow, when I look back, was helpful. कि अच्छा हाँ ठीक है, like. So she would discuss. She was very open. So I think that discussing things is very important. तो मुझे जो भी बुरा लगता था, or she would always encourage that talk about it. So talk then about she it. had the cue, right? Without correct. knowing the landscape of mental health या वो सही terms और वो सब नहीं पता होंगे उनको. But talk about it is so important. Yeah, absolutely. And she would always encourage that if not to me, talk to your sister or talk to your friend. But जो भी हो रहा है ना, निकालो. हाँ, निकालो, exactly, which is, I think, probably a part of therapy. I don't know. So, because I'm not a expert, but जितना मैंने सुना है. So, she would always say, and कभी-कभी जैसे आपका मन भी नहीं करता है बात करने का, but if the other person just starts the conversation, तो you just happen to sort of. So she would do that a lot of times, कि अच्छा, no. She would pick up something which she probably knows is triggering me, and then it would just probably just all of it would come out. So I think that was. Now when I look back, was probably a coping mechanism. उस time तो नहीं मुझे इतना लगा था. So talking about it, also I think my job at that time with the radio was sort of an outlet to come out of the house. Correct. So that also becomes like, अच्छा, okay, you'll get to see different faces, or you'll get to like meet different people. तो वो थोड़ा मतलब वो निकल जाता है, एक routine सा आपका बन जाता है, which I also tell a lot of people now, and I also feel it very strongly in me that एक routine होना बहुत इम्पोर्टेंट और घर के बाहर निकलना. मुझे याद है उन दिनों में जब हम मिर्ची में मिलते थे, you used to tell me कि ये बाहर निकलना और फिर वो टाइम मेरा है. Correct. Like even that used to be very, you used to value that a lot. Absolutely. And that's the reason that I used to sort of मैं संडे को भी ऑफिस आ जाती थी. हाँ, एग्जैक्टली. तुमसे कुछ भी काम करवा लिया जा सकता था क्योंकि तुम ऑफिस आने के लिए हमेशा तैयार होती थी. Right. Even that 10-minute drive with yourself used to be very like very, yeah. क्योंकि I think कई बार क्या हो जाता है, घरों में कोई स्पेस ही नहीं मिलता क्योंकि हमारे इंडियन घरों में बच्चा अपना दरवाजा बंद कर ले, कुंडी लगा ले और अपना मी टाइम करे. माँ बाप दो लगाएंगे, क्या मी टाइम? वी टाइम है यहाँ पे. वी टाइम है यहाँ पे, हर चीज वी है. True. So वो थोड़ा that used to be which is also something that my mom has also inculcated in me, that to have that routine, to have that, because she also felt that because that this she was told by an elderly again कि she used to say कि even if your husband earns कितना भी money, just do that job because of your well-being, more than anything Your else. mom worked? Yeah, my mom is a teacher. Oh, lovely. Yeah. तो उनका तो एक routine है since childhood. Like she will leave home at 7. तुमने पढ़ाई किसी बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट में की हुई है ना? जी. किसमें? I forget. I'm an engineer by qualification. Yeah. कितनी उम्मीदें थी पापा की. Exactly. Actually, अभी भी मेरे को कभी सुनने को मिलता है कि वो तुमने वहाँ हमारे इतने पैसे खर्च कराए. Like, अभी आंटी जी बनी फिर रही हो, वो भी बेशरम वाली. True. So हाँ, इंजीनियरिंग मैंने उसमें करी. तो क्यों करी? पढ़ाई में क्यों करी? एक तो I am very indecisive in life, I feel. So and I was very good at studies. I was very good at like mugging up stuff. तो मेरा बहुत मन था eco honors करने का from Delhi University के one of the colleges. But मेरा कहीं भी नहीं हुआ, पता है. Like I couldn't clear the cutoffs. Cutoffs were like 99, 98 and all that. Na? Crazy and cutoffs. And especially I think eco के लिए कुछ ऐसा भी था. I don't know if I'm remembering it correctly, but कुछ ऐसा भी था that if you're coming from a science background, तो आपके शायद 5% कम होते हैं या 2% कम होते हैं. कुछ ऐसा भी logic था. So I couldn't clear the ones which I really wanted. Like I wanted SRCC, I want Stephen. ये सब मेरे को मिला ही नहीं. So I was very this thing कि अच्छा. तो उसके बाद ना again indecisive. So I had no idea कि क्या करना है life में. So मैंने कहा सब try करते हैं. तो मैंने निफ्ट का भी दे दिया entrance, मैंने law का भी entrance दे दिया. And I was like, चलो I'm coming from a PCM background, तो चलो engineering का भी दे देते हैं. और किसी भी entrance में मेरा कहीं कुछ clear नहीं हुआ. And then I was there, मैं क्या करूँ मैं? Then somebody suggested Amity, the college that I have done my engineering from, and वहाँ पे scholarship मिल रही थी मेरे को because I had like certain. तो I was like, चलो ठीक है ये कर लेते हैं. Plus I'll also tell you कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि फिर मुझे लगा 4 साल हैं, चलो 4 साल अब मैं ऐश करूँगी लाइफ में.
हाँ, ऐसे तो करके होता तभी है। भी मीडिया, क्रिएटिव स्पेस वगैरह की तरफ दिमाग गया ही नहीं था। तो तुम जर्नलिज्म अमेठी से टपकी और मिर्ची में कैसे उतरी? हाँ, सो दैट्स ऑल्सो लॉन्ग स्टोरी बट आई कट इट शॉर्ट। बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग कर ही रही थी ना, तो आई यूज्ड टू डू दीज़ रेडियो शोज़ ऑन अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इट वाज़ हाँ, इट वाज़ कॉल्ड रेडियो नोएडा हियर इन नोएडा राइट, ओनली। आई रिमेंबर। हाँ, so I used to do my radio shows there. Weekend पे जाके मैं करती थी, and then thankfully Mirchi did a RJ Hunt, so हाँ, so I participated in that. I didn't win it again. Somebody else won it, but I because I had that 1 year, so I was like, chalo, let me intern. So I remember हाँ, coming back to Mirchi and just saying that I can probably work as an intern in this that. So I was interning with Naved's show for a good 7-8 months, and then yeah, so that's how it happened. So सुपर। yes. तो वहाँ से तो मुझे याद है, आई रिमेंबर योर यूट्यूब जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ यू वर वेरी क्लियर अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट टू डू, व्हाट यू डोंट वांट टू डू, कुछ लड़ाइयाँ भी हुई थी मिर्ची में उस दौरान। बट कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ माइंड बॉडी मनी व्हिच इज़ बॉडी। रेडियो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो, बट सडनली व्हेन द कैमरा इज़ ऑन सेल्फी मोड और द कैमरा इज़ ट्रेन्ड ऑन यू नॉन स्टॉप, और अब इंस्टाग्राम पे तो और भी ज़्यादा है क्योंकि और फ्रीक्वेंटली डालना पड़ता है कंटेंट। कभी ये प्रेशर फ़ील हुआ कि इस तरीके से दिखना है, इस किस्म के कपड़े पहनने हैं, बाल ऐसे होना चाहिए, वेट ऐसी होनी चाहिए, फिगर ऐसा होना चाहिए। वो प्रेशर कैसा रहा तुम्हारे लिए और तुमने कैसे डील किया उसके साथ? नहीं, एब्सोल्युटली वो प्रेशर तो है ही और अभी भी है वो प्रेशर। हुँ। इट्स नॉट कि लोग इतना बात करते हैं अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल दैट, हुँ, बट हुँ, हुँ। आई जस्ट फील दैट उस उन सब के बावजूद भी वो प्रेशर है टू लुक अ सर्टेन ऑफ़ वे, कोर्स, ऑफ़ कोर्स। to look the conventional way, I'll say. Even now, very recently, somebody told me, like, I think 3-4 weeks back, I think somebody told me that, just बॉडी ठीक है, बॉडी ठीक है, जस्ट तुम ना अपने फेस पे फोकस करो, तुम्हारा फेस पतला होना चाहिए. So I was like, "Hey?" So they were like, body ka nobody really cares, okay? It's just your face. So, your double chin or your jawline or basically, your cheeks and all should look chiseled. चेहरे को अलग से पतला कैसे करते हाँ, हैं? तो मैंने कहा मैंने भी यही कहा, मैंने कहा मैं मतलब then I'll work on my entire no, just on your face, do face yoga, this that, or there are surgeries and all that. So I was like, I know हुँ, what is this, those thread lifts and all that. So ओके। तो ऐसे प्रेशर आते हैं बहुत कि आप इस पार्ट ऑफ द बॉडी को ना आप थोड़ा इसको देख लो, उसको देख लो. This is looking a little fatter on camera. कैसे डील करती हो? तो पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था when I used to put out a photo or a video and people used to comment, like मोटी भैंस, all that, which they still या do. पहले मेरे को बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था am I this bad? Am I this bad? Do I look that bad? What is happening? So how did I deal with it? बहुत मेरे को फर्क पड़ा. I remember deleting some comments also. But then एक आध बार ऐसा हुआ that I left that comment, I didn't delete it, and somebody unknown, somebody, one of the followers, केम एंड डिफेंडेड। yeah, which was such a great feeling. ग्रेट I was like, फीलिंग, या कि ये क्या हुआ? सो And then स्वीट। then I said कि ये thread शुरू हो गया ऐसे नीचे, फिर वो कुछ कह रहा है, फिर ये हाँ। कुछ कह रही है, फिर कोई कुछ कह रहा है, दे आर like फाइटिंग योर बैटल्स फॉर यू। ये yeah, मैंने अपने yeah, जो funny. पॉडकास्ट करती थी उसमें भी ये होता था। कभी-कभार कोई कमेंट आ जाए और उसको छोड़ दो, तो आपके जो लॉयल फॉलोअर्स और लिसनर्स हैं वही हाँ, आपके लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। दे फाइट योर बैटल्स फॉर यू। हुँ। correct, which is such a, I think it's a very emotional feeling, हुँ। I think. मुझे क्योंकि तो तो वो पाकिस्तानी कहा जाता है ना बार-बार, अच्छा, क्योंकि मैं अच्छा. उर्दू बहुत यूज़ करती हूँ। जी, 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 तो मेरा करेक्ट. गो टू पाकिस्तान होता रहता है। तो हाँ, तो ऐसा हुआ 1-2 बार एंड देन मुझे लगा कि अरे वाह! मतलब देयर आर पीपल हू probably like me the way I am or हाँ, like वेरी so that was a very अफर्मिंग। moving feel. Yeah, या exactly, like a very affirming feeling. So I was like, so then I started keeping that, and then I was like, chalo, theek hai, there are probably few people who are like that, which is okay. I can probably deal with them. So ye hua, and a lot of people then started focusing on the content and started talking about the content, and हुँ। then they and somehow those threads used to divert people to like, but look at why are you focusing on that? Focus on the content that she's making, focus on the content that हुँ। she's making, and so yeah, so I was like, I think it was a स्लो प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है कि अब मैं बिल्कुल इम्यून हो गई हूँ, अब तो कोई भी कुछ भी कह दे, मतलब मैं स्ट्रेस तो होता है जब कोई हाँ, मतलब हाँ,
डिजाइनर ब्रांड पहन के फोटोशूट करना होता है एंड ऑल दैट, तो टेंशन बिल्कुल, होती है? बिल्कुल। और कभी-कभी डिज़ाइनर ब्रांड्स पे साइज़ेज़ भी नहीं मिलते हैं आपके। सो एक दफ़ा एक 2 बार ऐसा हुआ है कि दैट आई हैड टू वेयर समथिंग एंड देन दिस स्टाइलिस्ट सेंट मी क्लोथ्स एंड इट वाज़ लाइक आज शाम को जाना है इवेंट पे एंड अभी सुबह कपड़े आ रहे हैं एंड दे आर टाइट एंड आई वाज़ लाइक ये तो मेरे को फिट ही नहीं आ रहा है एंड आई एम कॉलिंग हर एंड देन आई वी वर डिस्कसिंग. But now brands have also become very, like open to like all sizes and, they make sizes like that. So it's changing, but it's not that I have completely become immune to all comments. तुम But वैसे I कुछ think करती हो? तुम्हारा कोई एक्सरसाइज रेजिमेन, ब्यूटी रेजिमेन वगैरह है? नहीं, बीच-बीच में कभी डाइट कर लेती हूँ. जब मेरे को खुद कभी लगता है that probably I started ज़्यादा having हो रहा है। some pains and this that, हुँ। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आई स्टार्ट डूइंग वॉचिंग समथिंग. व्हाट यू बट ईट। ऐसा कोई yeah, exactly, mostly, which is a good practice. I'm not ऑफ कोर्स। just हुँ। for body positivity, but also for like just a general. हेल्थ एंड So, फिटनेस। या। exactly, like a health practice. So, I definitely watch what I eat, and I exercise is something which is missing in my routine, in my regimen, आई which नो, I हमारी think I काफ़ी should. बातें हो चुकी हैं इस पे। So I should, I think, start going and start doing some exercise. I mean, मैं कल परसों ही किसी को बताई थी. I was like, I don't eat that much junk, which is true. I don't eat that much junk. But that's what people have to understand, that कुछ body types ही ऐसी होती हैं. हाँ। Which is what body positivity is all about. Because a lot of people say कि body positivity is promoting eating junk. कि अच्छा मोटे हो गए तो क्या हुआ. But it's not that. It's like that you have to accept all body types. नो, एंड यू हैव ग्लोरियस ग्लोइंग स्किन, स्पार्कलिंग आईज। तुम्हारे चेहरे से पता चलता है तुम बहुत ज्यादा जंक तो नहीं खाती होगी, क्योंकि योर स्किन शोज हेल्थ, योर हेयर शोज हेल्थ। करेक्ट. तो थैंक यू. तो फिर ऐसा तो लोगों को ये गलत नोशन भी है कि अच्छा बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे जंक प्रमोट कर रहे हैं, कि कुछ भी खा लो, मोटापा प्रमोट कर रहे हैं, इज व्हाट पीपल से, राइट? बट दैट्स नॉट ट्रू. आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे जितनी भी पतली हो जाऊं, मैं बहुत सबसे अपना बेस्ट डाइट कर लूं और बेस्ट लोएस्ट वेट पे आ जाऊं, तब भी आई कांट compete with a Bella Hadid because her body type is only बॉडी different. टाइप्स भी कुछ चीज Yeah, होती है, एक अलग होता exactly. है। ये मैंने तो, तुम्हें पता है मैं व्हाट एन एक्सरसाइज फ्रीक आई एम, I बट I मुझे know, I अपना, know. आई हैड टू एक्सेप्ट दैट आई हैव अ डिफरेंट बॉडी टाइप फ्रॉम द वेरी थिन एंड्रोजिनस। मतलब मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, जो एक पेटीट फ्रेम होता है ना, लेट्स से फ्रॉम गर्ल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, वो तो Correct, मेरा मर के correct. भी नहीं होगा। बंगालन हूँ यार, दिखता है। Correct. नहीं, but I remember ऑफिस में तो a lot of people used to say about you also, which I felt कि कितना सही बात है. तो used to say Riya says कि वो जिम इसीलिए करती हैं so that she can have गोलगप्पास. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मुझे एक बारी मेरा जिम इंस्ट्रक्टर मिल गया था जिम के नीचे, कि ये खा रही हो तो फिर वर्कआउट करने का क्या फायदा है? मैंने कहा वर्कआउट करने का क्या फायदा है अगर मैं ये नहीं खा सकती तो? अजीब हो यार। True, which is so true. I was like, ये तो कितनी सही बात है. Otherwise क्यों कर रहे हो वर्कआउट यार? अपने मन का तो करेक्ट। खाओ. उसके बाद घास-फूस खाऊँ और वर्कआउट करूँ, मर ही ना जाऊँ। अच्छा सुनो सुकृति, हम तो गपियाते रहेंगे, पर मुझे हाँ जी, थर्ड हाँ जी. एस्पेक्ट पे भी आना है जल्दी से। Yes, let's go. वो Let's है go. मनी। Yes. मनी के साथ एक बहुत, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाउ डज दैट फील? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ। Arey, it's a really great feeling to be able to use your own money. I think जी। it is a feeling which is very, I think, underestimated. Not many people talk about एब्सोल्युटली, it. या। So, चाहे आप कितने भी अमीर घर के हों, आपके पापा कितना भी पॉकेट मनी देते हों, आपके पति कितने भी वेल प्लेस्ड हों, अपना पैसा होता है। हाँ, वो तो है. That feeling of अच्छा ठक ठुक, like here, swipe my card. Like करेक्ट। that is a very empowering feeling, I feel. राइट। So that of course is there, and that's why they say to do a job to be financially independent, which is again something that my mom has always taught me, that be financially independent. It is you should be, all everything aside, but just do it. And this is something that I've experienced. And my sister, again, we've had a conversation about this, because there was a time when my sister was working before I was working. And then beach mein, she had taken a sabbatical and she was changing jobs and it was long. It was for 3-4 years because she was preparing for an exam. तो तब वो मेरे को कहती थी कि एक तो होती है कि the feeling of being financially independent, अच्छा पैसा आएगा. एक feeling होती है जब वो feeling चली जाती है, when suddenly you are not getting your salary.
and you have experienced that part कि दैट आपको फ्रीडम, की वो बहुत salary. बुरा होता है। मुझे पता है, मैंने नौकरी छोड़ी हुई है, तो मुझे पता है वो फीलिंग कितनी खराब होती है, कितनी भयंकर इनसिक्योरिटी देती है वो फीलिंग। Exactly. हुँ, So that is why we've talked about that is very important to earn your own money and to be able to spend your own money is very, very important. राइट। Also, I'll be honest with you, in my own house, I've seen a lot of fights and battles around money. हाँ, मतलब मैंने देखा है वो घर में छोटी-छोटी चीजें, जो भी छोटी लड़ाई होती थी between parents used to somehow boil down to money. हाँ। And for me, for the longest time, it became quite a, what do I say, like a devil in the house. And I have also seen that, out of the two parents, whoever used to earn more, used to have a lot of arrogance around it. Ki, "Acha, ओह! because ओके। I'm earning, so I can do आई एम whatever I ब्रिंगिंग, like." ओके। Yeah. So, which also stayed in me. तो इट्स मतलब बहुत साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं तुम्हारे घर में है पैसों उसमें. का। And that is why it's not there with me. And I have deliberately not brought that feeling inside me. And I've always stopped from feeling that arrogance around money because I've seen what it leads to. Are you allowed to contribute to the household, or is that not? Yeah, of course. If it's not like a rule or, like a responsibility, but like if I want, then. तुम ले आती हो घर के लिए, क्योंकि तुम अभी भी, हाँ, for हाँ, our listeners should know you're still staying with your family. You're in the same absolutely. home. So you are Absolutely. allowed to. You are not told by पापा कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा भी होता है कभी-कभी, आई एम टोल्ड कि नहीं ये मतलब छोड़ो एंड दिस दैट, बट आई वाज लाइक नहीं, कभी-कभी लाइक एक आधा महीना आई एम लाइक अच्छा चलो ठीक है, लेट मी सो Get वो some सब दैट. provisions or हाँ, something. हाँ, और समथिंग दैट आई वांट और समथिंग दैट आई फील इज मिसिंग, सो आई वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है, लेट मी. जैसे कि what was the last one? What's the most expensive thing you have spent on for your home, not on yourself? So, not exactly home, but I remember getting like a phone for my parents, like for my dad, for my mom, a TV Nice, inside the nice. house. So yeah, so I think all that. What else? So I'm very like, अच्छा कुछ party हो रही है, कुछ हो रही है, so I'll be like, नहीं, the decoration I'll get it done, and I'll do all Nice, the very nice. little things, so. हाँ, कि किसी को हाँ. लगे नहीं, किसी के ईगो को भी ना कि अच्छा प्रॉब्लम तुम. ना हो कि अच्छा पैसे दिखा रही हो तुम। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। तो एक, that is also the aspect ना, अच्छा अब इतनी हम्म, बड़ी हो गई कि. पापा को पैसे दिखा रही है। हाँ. So वो सब है. But like coming back to what I was mentioning about, how that being like a demon. So मतलब I have deliberately felt and I have kept myself away from feeling that arrogance ever. So I feel कि नहीं, let me not associate money with that. So it's coming from some childhood trauma, I think. So No, yeah. but So you are aware of this, that money was a yes, power dynamic in your home. तो उसको absolutely. फ्रीडम भी जरूरी है, बट फूंक फूंक के कदम भी। अपने लिए सबसे महंगी क्या, लुबर्सा के जूते खरीदे कि नहीं, अरे मैं तो बहुत आई एम वेरी, आई डोंट नो, आई एम वेरी, मुझे बहुत अजीब सा हो जाता है whenever I want to spend something which is a huge amount on a thing like a bag or बैग और shoe. जूता मुझसे नहीं होता है। हमारा मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग ना कूट कूट के भरा हुआ है। सेम मुझे लगता है इतना नहीं, will I ever use it, will I ever, कितनी बार पहनूंगी, कितनी बार ये सब करूंगी. So I think that I want to spend on something that I'll use, probably like a laptop or like a phone, nice, a something good that will help. phone or something Yeah, something decent. that will help me like shoot videos or edit them, Right. and so I think that. But the most expensive is the laptop that I've got. So I think for myself, yeah. So that's the not a juta or anything. Like my sister keeps saying, kuch kharid lo. Like she's interested in like skincare and all that expensive skincare and expensive moisturizers and all that. So वो मेरे को कहती है, like the other day I was at a duty free and she was like, हाँ ये ले आना वो ले आना. I was like, वो I'm ले like, और मैं आना। कह रही हूँ है, मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है. कोई नहीं. She's like, get a small bottle, get a this, that. So I remember I got like a small bottle of some very expensive skincare, which I've not used yet. Because again हमारी upbringing, हम है, मेरे में है ही नहीं वो. कैसे मैं रात को ऐसे अपना CTM करूँ और ये सब करूँ. It's not there. नहीं है, सो जाओ मुंह धो के बस। हाँ, correct. At max sunscreen और वो mist लगा के सो जाओ. So yeah, that's there.
That's superb, man. And I think आज के चैट को सुनकर आई एम होपिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल रियलाइज कि इंडियन लड़की होके भी कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ जा सकता है, मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जा सकता है, बॉडी पॉजिटिविटी को देखी जा सकती है। थैंक यू सो मच सुकृति। As always, it was Thank you. wonderful. Actually, I should say this is Riya saying bye to Riya, right? Yes. तुम्हारे घर का नाम रिया है ना? Absolutely. Absolutely. No, thank you for having me over. Thanks. It's a great podcast. I love the name. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.